हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं हम थर्मोडायनामिक्स चैप्टर को। नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। सो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है बच्चों? एक जो सिस्टम है वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब वहां पे जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो है सिस्टम की, उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा टाइम के साथ। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स में सिस्टम के अंदर वहां पे कोई भी चेंज नहीं होगा मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के अंदर, तो उसे हम क्या बोल देंगे कि जो सिस्टम है वो किस में है? इन द स्टेट ऑफ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। ऑलराइट, सो अ सिस्टम in which macroscopic properties in different parts of the system do not undergo any change with time. With time is said to be in a state of thermodynamic equilibrium. Thermodynamic equilibrium. थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा बच्चों? सिस्टम जिसमें जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं डिफरेंट पार्ट्स के अंदर सिस्टम में, वो चेंज नहीं होगी, उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा टाइम के साथ में, उसे हम क्या बोलेंगे कि जो सिस्टम है वो किसमें? इन द स्टेट ऑफ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों क्राइटेरिया क्या है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए। तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होने के लिए सिस्टम के अंदर 3 हमारे जो इक्विलिब्रियम है वो साइमल्टेनियसली होते हैं: थर्मल, केमिकल एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। सो नेक्स्ट है criteria for thermodynamic equilibrium. क्राइटेरिया क्या है? So to be in the state of thermodynamic equilibrium, in the state of thermodynamic equilibrium, the system must attain 3 types of equilibria simultaneously, and these are: first, thermal equilibrium; second, mechanical equilibrium; and third one, chemical equilibrium. फाइन स्टूडेंट्स, तो देखिए क्राइटेरिया क्या है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए। टू बी इन स्टेट ऑफ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, जो सिस्टम है वो क्या करेगा? अटेन करेगा 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रिया को साइमल्टेनियसली, तीनों होंगी। इनमें क्या आ जाएंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम फर्स्ट, सेकंड मैकेनिकल एंड थर्ड वन इज केमिकल इक्विलिब्रियम। वन बाय वन इनको हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट है थर्मल इक्विलिब्रियम। सो अ सिस्टम is said to be in thermal equilibrium if no heat flows from one part of the system to another.
and this can be achieved when, या फिर हम बोल सकते हैं if the temperature remains constant throughout the system. थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है बच्चों? एक जो सिस्टम है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा तो वहां पे कोई भी हीट फ्लो नहीं होगी एक पार्ट से सिस्टम के दूसरे पार्ट के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा कब होगा? जब टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा हमारे थ्रू आउट दी सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। सेकेंड वन इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। सो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? अ सिस्टम इज सेड टू बी in mechanical equilibrium if no mechanical work is done by one part of the system, on the another part of the system, ठीक है बच्चों। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा? एक जो सिस्टम है वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होगा तो वहां पे कोई भी मैकेनिकल वर्क नहीं किया जाएगा बाय वन पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑन दी अनदर पार्ट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम सो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है बच्चों? अ सिस्टम is in the state of chemical equilibrium if there is no change in the composition of various phases in the system देखिए बच्चों केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? एक जो सिस्टम है वो केमिकल इक्विलिब्रियम के स्टेट में कब होगा? जब वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा कंपोजिशन के अंदर अलग अलग फेजेस के सिस्टम में, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम स्टडी करते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस को। थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, अभी तक हमने क्या पढ़ा? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम को हमने स्टडी किया जिसमें हमने क्या पढ़े? तीन इक्विलिब्रियम को स्टडी किया, थर्मल, केमिकल एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस को। इसमें आ जाएंगे आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, ठीक है, एडियाबैटिक, तो इन सभी को हम स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट हम देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। So a process is said to be isothermal if it is carried out at constant temperature, ठीक है बच्चों। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या हो जाएगी? वो प्रोसेस जो कैरी की जाती है हमारी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उसे हम क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस। थ्रू आउट द प्रोसेस जो टेम्परेचर बच्चों सिस्टम का वो कांस्टेंट रहता है, एंड फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस जो dt है दैट इज इक्वल टू 0। सो फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस dt दैट इज इक्वल टू 0, ओके। नेक्स्ट है बच्चों एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है? अ प्रोसेस इज सेड टू बी
said to be adiabatic process. Adiabatic process when the system does not exchange heat with the surroundings. That is, no heat flow from system to surroundings, or vice versa. System to surroundings or vice versa. And for an adiabatic process, dq is equal to 0. ठीक है बच्चों, तो एडियाबेटिक प्रोसेस क्या हो जाएगी? ऐसी प्रोसेस जिसमें जो सिस्टम है वो एक्सचेंज नहीं करता है हीट को किसके साथ में, सराउंडिंग्स के साथ में, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे कोई भी हीट फ्लो नहीं होगा सिस्टम से सराउंडिंग से और सराउंडिंग से सिस्टम में, डी क्यू दैट इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट है आइसोबारिक प्रोसेस, प्रेशर कांस्टेंट. आइसोबारिक प्रोसेस, a process is said to be isobaric if it is carried out at constant pressure. If it is carried out at constant pressure. And for an isobaric process, dP is equal to 0, and most of the reactions in laboratory is carried out at constant pressure. तो आइसोबारिक प्रोसेस क्या होगी बच्चों? वो प्रोसेस जहाँ पे जो हमारा प्रेशर है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो वो आइसोबारिक हो जाएगी. डीपी इज इक्वल टू 0 होता है और मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो है लेबोरेटरी में वो कैरी की जाती है कांस्टेंट प्रेशर पे. तो ये थी हमारी एडियाबैटिक और आइसोबारिक प्रोसेस. नेक्स्ट अब हम स्टडी करते हैं आइसोकोरिक को और साइक्लिक प्रोसेस को. नेक्स्ट है आइसोकोरिक प्रोसेस, volume constant. So a process is said to be isochoric if it is carried out at constant volume. And for an isochoric process, dV that is equal to 0, change in volume that is equal to 0. तो यहाँ पे क्या होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस में जो वॉल्यूम है वो हमारा क्या रहेगा बच्चों, कांस्टेंट रहेगा. नेक्स्ट है हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस. So it is a process in which the system returns to the original state after undergoing a series of changes. And for a cyclic process, du is equal to 0 and dH is equal to 0.
चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज इक्वल टू 0 एंड चेंज इन एंथैल्पी दैट इज इक्वल टू 0। तो साइक्लिक प्रोसेस क्या है बच्चे? एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर जो सिस्टम है वो क्या होता है, वापस से अपने ओरिजिनल स्टेट में आता है। बहुत सारी चेंजेस वहां पे होती हैं, ठीक है। ओरिजिनल स्टेट में आता है अंडरगोइंग अ सीरीज ऑफ चेंजेस, बहुत सारी चेंजेस के बाद में वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ जाता है। तो ये क्या होती है, हमारी एक साइक्लिक प्रोसेस होती है। मतलब जो हमारी प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो रही है और फिर यहाँ पे आके वो खत्म होगी, तो ये क्या होगी, हमारी एक साइक्लिक प्रोसेस होगी। आफ्टर अंडरगोइंग अ सीरीज ऑफ चेंजेस जो हमारा सिस्टम है रिटर्न हो जाता है, वापस से आ जाता है अपनी ओरिजिनल स्टेट में। सो इट इज अ प्रोसेस इन विच दिस सिस्टम रिटर्न्स टू द ओरिजिनल स्टेट आफ्टर अंडरगोइंग अ सीरीज ऑफ चेंजेस। और यहाँ पे जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज इक्वल टू 0 एंड चेंज इन एंथैल्पी दैट इज इक्वल टू 0। तो ये थी हमारी आइसोकोरिक और ये है साइक्लिक प्रोसेस। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर बच्चों हमने कौन सी पढ़ी है? आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस एंड साइक्लिक प्रोसेस। इस वीडियो में बच्चों हम इतना ही करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आए इस टॉपिक में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।